Good morning, student. This is Sanjay Rahi and welcome to the biology class. Students, today we will see the last step of the central dogma, that is the translation. Translation, it is the process of formation of proteins from the information stored inside the messenger RNA during transcription. सो देखिए ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन, जितने भी तरह की प्रोटीन्स दे आर फॉर्म दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, they are formed with the help of this translation. So it is a wonderful process because you know that there is a great role of proteins inside the body, whether we just talk about the structural work or whether we just talk about the functional aspect of the cell. So structural as well as functional aspects of the cells, actually they are controlled by the protein itself, and translation is the process of making those proteins for the cell. So let us begin with the translation. We have a machinery that is used for the translation, and that machinery, the first machinery is the ribosomes. You can see here that there are two types of ribosome in case of the living organism. You can see here eukaryotic ribosomes are there as well as prokaryotic ribosomes. You can see here. See, ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दे आर हैविंग अ टाइप ऑफ द एटीएस टाइप. तो ये क्या है, एटीएस टाइप के राइबोसोम्स हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज ऑफ 70s टाइप ऑफ राइबोसोम. Dear student, generally ribosome occur in two units. Actually, when protein synthesis does not occur at that time, this ribosome actually it is dissociated into two units. So one is the bigger unit and one is the smaller unit. So in case of eukaryote, the bigger unit is the 60s sorry, and the smaller unit is the 40s. S is the Swedberg unit here. Similarly, in case of prokaryotes, it is 70s and the units are 50s and the 30s. So this is a unit, actually this ribosome. When the protein synthesis starts, this ribosome actually again associated, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं ये आपस में एसोसिएट कर जाती हैं. किस तरह से एसोसिएट करती हैं वो हम आगे देखेंगे. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट प्ले a great role in case of translation, dear student, that is the you can see here tRNA, that is the transfer RNA. Why we call it as a transfer RNA, dear student? It is clear now that it helps to transfer the amino acids. Now look at here, look at the different ends of amino acids, sorry, this tRNA. अगर हम इस tRNA को ध्यान से देखें, so you can see here there are different sites. So अगर हम देखें तो ये वाली जो साइट है, दिस इज दी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है. टीआरएनए की ये जो साइट है, यहाँ पे क्या लगता है आपका अमीनो एसिड जुड़ेगा यहाँ पे. दिस इज द अमीनो एसाइल साइट, ठीक है. सो दिस इज दी राइबोसोमल साइट इज देयर, दिस इज दी एंजाइमल साइट इज देयर. और ये जो इसकी जो अगर आप इस साइट को देखें, दिस इज दी एंटी कोडोनल साइट, दिस इज दी एंटी कोडोनल साइट, बिकॉज कोडोन आर प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए. जो कोड प्रेजेंट है वो किस पे है, मैसेंजर आरएनए पे है. तो ये एंटी कोडोनल साइट जो है, ये इसका जो एंड होगा जो ऑपोजिट टू द अमीनो एसिड एंड, दैट इज द एंटी कोडोनल साइट. सो दिस एंटी कोडोनल साइट विल बाइंड विद द मैसेंजर आरएनए. सो माय डियर स्टूडेंट, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इज दैट, देखिए प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो हाउ मैनी, देयर इज ए स्मॉल क्वेश्चन दैट हाउ मैनी amino acids are there. So the question is how many amino acids are there. तो total जो amino acids वो कितने हैं. हाँ जी, so there are total 20 amino acids are there. 20 amino acids हमारे पास हैं, and out of these 20 amino acids we know that 9 amino acids are essential one and 11 amino acids are non essential one. So you can see here, ये जो tRNA होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इसका मतलब अगर 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास हैं तो दीज tRNA दे आर आल्सो 20 इन टाइप. इसकी जो टाइप है tRNA की वो भी कितनी है, 20 टाइप्स की है. मैंने पहले कहा कि दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब
one tRNA will carry only one type of amino acid. इसका मतलब there are 20 types of tRNA which will carry amino acids. तो उनका जो एंटी कोडोनल साइट्स होगी, ये भी क्या होगी आपकी, ये जो साइट आप देख रहे हो ये भी क्या होगी आपकी स्पेसिफिक होगी. तो देर आर 20 amino acids, so there are 20 type of tRNAs are there. So this tRNA is called as the adapter molecule for the amino acid. So it will carry amino acid during the process of the translation. Dear student, the whole of this translational process, actually it mainly consists of 4 steps. So what are these 4 steps? So dear student, actually you know that the first step is called as the activation of the tRNA or the charging of the tRNA. My dear student, what is activation and charging of the tRNA molecule? You know that tRNA is a adapter molecule. tRNA जो है एक adapter molecules है, तो it should be loaded with the amino acid. It is a adapter molecule for the amino acid, so it should have an amino acid. So the loading of this amino acid on this particular tRNA is called as the charging of the tRNA. So charging of the tRNA occur in presence of enzyme, that is the amino acyl tRNA synthesis, and in presence of the ATP. यहाँ पे जो ATP के जो molecules हैं ये consume होते हैं. See here. So you can see that charging of the tRNA means activation of tRNA means loading of amino acid on the tRNA with the help of the amino acyl tRNA synthesis. तो यहाँ पे जो enzyme use हो रहा है that is the amino acyl tRNA synthetase. तो इसकी प्रेजेंस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है that is the amino acyl tRNA कॉम्प्लेक्स. तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दिस इज द अमीनो एसिड 1 tRNA कॉम्प्लेक्स. कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है. तो अमीनो एसिड जो होता है tRNA के साथ लोड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एंड चार्जिंग ऑफ द tRNA. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. So you can see here the second step is the initiation. Now what is this initiation? देखिए अगर हम इनिशिएशन की बात करें डियर स्टूडेंट, दिस इनिशिएशन पार्ट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. जो इनिशिएशन पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनिशिएशन आकर विद द हेल्प ऑफ द 3 इनिशिएशन फैक्टर. However, यूकैरियोट्स के अंदर जो 7 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं बेसिकली दे हेल्प टू इनिशिएट दिस होल ऑफ द प्रोसेस. इनिशिएशन फैक्टर्स आर देयर. सो इफ वी जस्ट सी हियर in case of living organism, अगर हम देखें during the initiation you can see here this is the messenger RNA, the encounter of messenger RNA with the smaller unit. अगर आप यहाँ पे देखो जो छोटी जो ribosomal unit है that will attach with the mRNA. तो at initiation what happened with the help of the, in case of prokaryote, with the help of the initiation factor 2 mainly, the smaller subunit come in contact with the messenger RNA, and then the first tRNA will occupy. Okay, before that the very interesting feature is that अगर हम देखें यहाँ पे जो राइबोसोम, तो राइबोसोम के पास दो इसके पास एक तरह से को 2 साइट हैं. वन इज द पी साइट, एक को बोलते हैं हम पी साइट बोलते हैं, वन इज द टी साइट है. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वन इज द सॉरी पी साइट एंड वन इज द ए साइट, सॉरी वन इज द पी साइट एंड वन इज द ए साइट. पी यहाँ पे होता है ये पेप्टाइड सिंथेसिस साइट आ गई जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होती है बेसिकली, एंड दिस ए इज द अमाइनोसाइल साइट आ गई. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ड्यूरिंग द इनिशिएशन द फर्स्ट टीआरएनए, ये देखिए ये फर्स्ट टीआरएनए है, फर्स्ट टीआरएनए विल ऑलवेज कैरी दिस मिथ्योनिन. तो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो मिथ्योनिन जो है ईच एंड एवरी प्रोटीन यूनिवर्सल है. जो भी प्रोटीन शुरुआत होती है जैसे हम बोलते हैं श्री गणेश करना, तो प्रोटीन का जो श्री गणेश होता है जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है दैट इज द मिथ्योनिन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टीआरएनए अगर आप देखिए जो फर्स्ट टीआरएनए कैरिंग दिस मिथ्योनिन, पहला टीआरएनए जिसने ये मिथ्योनिन लिया हुआ है, इट विल ऑक्यूपाई दी पी साइट. अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी तक सुपरफिशियल. सो दिस इज पी साइट ऑफ द राइबोसोम. तो मैंने क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर्स the messenger RNA encounter at the specific point with the ribosomes. Then what happened? Then one tRNA carrying
first amino acid, it will bind at the P site and the first tRNA will always carry methionine. तो ये यूनिवर्सल है, जो फर्स्ट मिथ्योनिन है, दिस इज ए यूनिवर्सल कोडोन, स्टार्टिंग कोडोन. मिथ्योनिन को हम इसीलिए स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं. तो मिथ्योनिन का जो कोड होता है बेसिकली AUG रहता है, इसका AUG. तो mRNA पे जहाँ पे AUG होगा वहाँ पे आपका tRNA with anticodon it will bind. Then what will happen with the help of the another initiation factor, this second tRNA, ये जो second tRNA अगर आप देखें, this one, this second tRNA with having a second amino acid that will occupy the A site. तो यहाँ पे P के बाद मैंने क्या बोला, दूसरी साइड कौन सी होगी, A साइट होगी. तो A साइट पे हमारे पास जो है वो दूसरा अमीनो एसिड जो ज्वाइन करेगा. With the help of these initiation factor, what happened now, the larger subunit will join. अब आप तीसरे स्टेप में अगर आप देखो, this whole of the process is the part of the initiation. तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, larger subunit now it will bind up, जो and further process will be started. तो let me revise it again, दोबारा से एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ. With the help of this initiation factor, this mRNA firstly will bind with this tRNA. ये जो mRNA है ये bind with the small subunit of the ribosome. With the help of the initiation factor, first tRNA will bind at the P site, then the second tRNA will bind at the A site, and after that what happened, the larger subunit will be bind up. तो large subunit जो है उसके बाद में जुड़ती है, and this is known as our translational complex. जब larger subunit जुड़ जाएगी तो ये क्या होगा हमारे पास, translational, this is the translational complex. तो ये हमारे पास बनता है translational complex बनेगा यहाँ पे. Now look at the picture here, you can see here again I am telling you this is the larger subunit. इसके पास हमारे पास दो साइट है, P site और A site is there. So first tRNA जो है it will bind at the P site. Then if we just see here the second tRNA it will occupy at the A site. ये A site पे आएगा, and our this whole of the complex is will be translation complex. Then third step is elongation. Now what is elongation here? If you just see here, what is this elongation? Actually the P site, already I have told you this is the peptidyl site. P is the peptidyl site. Basically जो P site है that carry the P site carry ribozyme enzyme basically, what I must say. और इसका जो अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाम देखें तो दिस इज दी अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम हम इसे बोल सकते हैं, या पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. तो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, अब ये देखो पी साइड पे जो टीआरएनए है उसके ऊपर जो अमीनो एसिड लगा हुआ है, यहाँ पे ये पी साइड आ गई आपकी, इस पी साइड पे जो ये अमीनो एसिड लगा दैट इज अ मिथियोनोन, और ए साइड पे जो आर्जिनिन अगर आप देखो यहाँ पे अमीनो एसिड आर्जिनिन, तो पी साइड पे क्या होगा, पी साइड विल एक्चुअली कैटालाइज द रिएक्शन बिटवीन दिस मिथियोनिन एंड आर्जिनिन. तो यहाँ पे एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए एंजाइम का नाम बोला हमने पेप्टिडाइल सिंथेटेज. ठीक है, आपकी पेप्टाइड बॉन्ड की पेप्टिडाइल सिंथेटेज ट्रांसफरेज पूरा एंजाइम का नाम है. एंड मोर ओवर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी प्लस यहाँ पे ट्रांसफर रिएक्शन होगा. ये मिथियोनिन जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू द आर्जिनिन हियर. तो मिथियोनिन जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, यू कैन सी हियर लाइक दिस, सी. ठीक है, वंस इट विल बी ट्रांसफर वन पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म, दिस ऑल ऑफ द राइबोसोम विल शिफ्ट टुवर्ड द 3' एंड. ये देखिए यहाँ पे जो राइबोसोम है ये पूरा ये शिफ्ट कर जाएगा. एंड वेल दिस राइबोसोम विल शिफ्ट, जो एम्प्टी टीआरएनए विल बी गोज आउट, जो एम्प्टी टीआरएनए है वो फिर से गोज आउट मतलब चला जाएगा. तो यहाँ पे आपका अब जो टीआरएनए है विद द 2 अमीनो एसिड इट विल ऑक्यूपाई द पी साइट एंड ए साइट विल बी अगेन एम्प्टी, एंड दिस ए साइट विल अगेन फिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ द अनदर टीआरएनए. एक और टीआरएनए आएगा कैरिंग वन लाइक दिस, इन केस में यहाँ पे ल्यूसिन अमीनो एसिड इज देयर, सो इट विल अटैच एंड अगेन व्हाट विल हैपन, दिस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पेप्टिडाइल सिंथेटेज ट्रांसफरेज जो एंजाइम है इट विल मेक बॉन्डिंग बिटवीन दिस आर्जिनिन एंड ल्यूसिन एज वेल एज द ट्रांसफर रिएक्शन. तो फिर से यहाँ पे ट्रांसफर रिएक्शन होगा और जो एम्प्टी टीआरएनए होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो फिर से बाहर जो निकल जाए इस तरह से. दिस इज द इलोंगेशन. नाउ ये जो इलोंगेशन है ये कब तक चलती है, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, जब तक कि थर्ड हमारा जो फोर्थ स्टेप है दैट इज द टर्मिनेशन. सो अगर मैं टर्मिनेशन की बात करूँ, टर्मिनेशन कब होती है, तो यहाँ पे जो
ट्रांसलेशन में जो टर्मिनेशन होती है, देर आर सर्टन स्टॉप कोडोन्स आर देयर. Now what are the stop codon? These are the stop codon which are present on the tRNA. जब ये जो stop codon है ये tRNA पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जब stop codon यहाँ पे आएगा तो आपके सारे के सारे ये जो यूनिट्स हैं, ये ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स है, ये टूट जाता है. सो यू कैन सी हियर देर आर 3 स्टॉप कोडोन्स. यहाँ पे हमने कुछ अमीनो एसिड्स बताए हुए हैं, ये कोडोन्स है सारे के सारे. तो यहाँ पे जो स्टॉप कोडोन है वो 3 स्टॉप कोडोन है. अगर आप यहाँ पे देखें, दीज आर द स्टॉप कोडोन, दैट इज द UAA, UGA एंड UAG. तो ये जो स्टॉप कोडोन, इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज फॉर दीज कोडोन देर इज नो अमीनो एसिड, दे डू नॉट कोड फॉर द एनी अमीनो एसिड. और जैसे ही ये स्टॉप कोडोन mRNA पे आएंगे या राइबोसोम, व्हेन इट विल रीच एट द स्टॉप कोडोन, बिकॉज देर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, there is no amino acid for the stop codon. So at this point what will happen? Whole of the translational unit will break down and the protein chain जो बनी है, that will be released into the cytoplasm. तो ये जो protein chain है ये cytoplasm में release हो जाती है. So let us have a look over the whole process of this translation. How the amino acids are coming, how bondings are formed, किस तरह से bondings जो है वो बन रही है यहाँ पे. So see how these amino acids are joined with the help of the peptide bonds.